Yes, Farah, now you are host. Okay, sir. Okay, good evening, students. So today we are going to learn about item analysis. Okay. Yeah. So what is item analysis? One by one, everybody will read and we will understand. Okay. So now we have. Okay. So Amrita, you go first. You read about this full para. Okay. Hello. Hello. Yes, Amrita. Yes. Amrita. Okay. What is item analysis? Within psychometrics, item analysis refers to statistical methods used for selecting items for inclusion in a psychological test. Item analysis is especially valuable in improving items, which will be used again in later tests, but it can also be used to eliminate ambiguous or misleading items in a single test administration. In addition, item analysis is valuable for increasing instructors' skills in test construction, and it is an important tool to uphold test effectiveness and fairness. Item analysis is a statistical technique which is used for selecting and rejecting the items of the test on the basis of their difficulty value and discriminated power. Farah, please you go to the next slide. Hello, Farah. Farah, you go to the next slide. Yes. Yes, sir. Yes. Okay. So now there is functions of item analysis. Okay. So first we learn about what is item analysis. Now the functions of item analysis. Okay. So functions of our item analysis are next is Seema. Seema, can you please read it for us? Are you there, Seema? Functions of item Okay, analysis. Seema. First Seema, one, yes. hello. Hi, yes, Seema. We Hello. can hear you. Yes, Seema, we can hear you. Functions of item analysis. Test. Second is rejecting appropriate items. And last one is modification in the structure of the items. Good. Okay. Appropriate item for the test, rejecting inappropriate item, and modification. These three steps are very important. Okay. Now, what are the characteristics of item analysis? Now, Sarah, you read. First is item difficulty value or pass percentage. The difficulty value of an item is defined as the proportion or percentage of the examinees who answer the item correctly. Low difficulty value index means that the item is highly difficult one. The formula for calculating the difficulty value of an item is dV is equal to RH plus RI divided by NH plus NL, where RH stands for rightly answered in highest group, RL stands for rightly answered in lowest group, NH stands for number of examinees in the highest group, and NL stands for number of examinees in the lowest group. The formula for calculating the difficulty value, if there are some examinees such that they are not giving any response to an item, in that case dV is equal to RH plus RL divided by NH plus N divided by L minus NR, where NR is
it stands for the number of non-response examinations. Okay, thank you. Thank you, Sarah. So now we will take one example to understand this, because there is written that the difficulty value of an item is defined as the proportion or percentage of the examee who answer the item correctly. And then there is written low difficulty value index means that the item is highly difficult one. So we will take one example to understand this. Like suppose that suppose you like I am conducting a test, I'm developing a test to assess problem solving abilities in college students. Okay, so they include various items. Of course, they include various items that requires participants to solve complex mathematical equations, right? So during the item analysis process, they calculate the difficult values for each item based on the proportion of students who answered the items correctly. Okay, because it is a complex test. Okay, so we have to see who is answering the items correctly. So one item, suppose let's call it item A, constantly showing that a low difficulty value. Matlab ki that is small. Yes, hello, sir. Pada. So now this item analysis is important for the knowledge test or the power test. Okay. For example, this ability test, intelligence is the power test. Aptitude test is the power test. Okay. So this is applicable for that particular test. This is not applicable for attitude test or attitude measurement, etc. Okay. Yes. It is not for personality test. Yes, sir. Yes. Okay. Now continue. Yeah. Yeah. So suppose in that test, in that particular test, that item X is constantly showing a low difficulty value. So meaning that a small percentage of students were able to answer it correctly. So because like sir said that it is a aptitude test. So of course everybody will not correct the will not solve it like everybody will not the answers will not मतलब सबके answer correctly नहीं आएंगे. So we have to see कि कितने लोगों के answer correct आ रहे हैं. So suppose so low difficulty value का मतलब ये है कि small percentage of students were able to answer it correctly. So based on that low difficulty value, we will conclude that item X is highly difficult. Okay, because item X को बहुत कम बच्चों ने solve करा. Okay, so this suggests that the majority of students struggled with solving that particular item in that test. Okay, so now moving to the next. And here is there's a formula also written like DV. DV is difficulty value equal to RH plus RL. Rightly answered in highest group, rightly answered in lowest group, and then number of examines in highest group, number of examines in lowest group. This is the formula you can put for to get the difficulty value or pass percentage of the test. Okay. Now next is discriminating power. Okay. Again, Amrita, you read discriminating power. Discriminating power. Discriminating power further can be divided into two parts. First is item reliability and second is item validity. Item reliability is maybe defined as the degree to which an item differentiate high and low groups on the basis of the same test scores. Whereas item validity may be defined as the degree to which the item differentiate between high and low group on the basis of some criterion test. Discrimination index. Index of discrimination is that. Yes, Amrita, don't read discrimination index. Okay. So now first we will understand what is this item reliability and item validity. Okay. We all know what is. Yes. Hello, Pada. Yes, here I like to add. Please you go to the item difficulty. Yes, sir, sure. Item difficulty slide. Yeah. So please you follow, dear students. Please you follow. Here it is clearly written the highest and the lowest. So the middle portion that is not accounted in this study. Okay. That means you should have very good number of data. Otherwise, you will be not able to get the item difficulty. Okay.
So good number of data you should have. Now here you follow it, highest and lowest, but not the middle portion. Can anybody tell me why middle portion is not here? Because everybody could answer that item. Yeah, that possibility is there. Okay, so we will not consider those groups. Thank you. Okay, now you continue. Discrimination power. Discriminating power. Yeah. Okay. So now we will take one example to understand this. Okay. Reliability and validity we all know, but here we are talking about item reliability and validity. So we will take one more example. So like we are talking about aptitude test only. So in that test there are several items. Okay. Can anybody tell me any aptitude test where we are particularly measuring any one domain? Ma'am, writing and reading application. Writing No, that and is a reading. different. Ma'am, No, differential no. aptitude test No. battery. हाँ ऐसा हाँ, कुछ पर्टिकुलर हाँ एप्टीट्यूड हाँ, टेस्ट differential aptitude test battery. हाँ तो उसमें सीमा कोई भी तुम्हें याद है कोई एक पर्टिकुलर जो हम उसमें तो काफी डोमेन्स होते हैं ना जैसे बहुत सारी तो कोई एक पर्टिकुलर कोई डोमेन को सपोज मेजर करना हो तो कुछ याद है बहुत सारे आइटम्स होंगे ना उसमें तो कोई एक पर्टिकुलर डोमेन को जैसे मैं तुमको समझाने के लिए एक दूसरे टेस्ट का एग्जांपल देती हूँ व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू एप्टीट्यूड टेस्ट सपोज पर्सनालिटी में जैसे 5 डोमेन्स होते हैं राइट एक डोमेन को हम मेजर करने के तो ऐसी उसी टेस्ट में कोई एक डोमेन है जो मेजर कर रहा हो उस पर्टिकुलर डोमेन को जो आइटम्स मैम बिल्कुल नहीं याद नहीं है कुछ सिर्फ भी नाम याद है अच्छा किसी ने कंडक्ट किया है एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया है या फिर कुछ भी याद है किसी पर्टिकुलर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में उसके कुछ भी आइटम्स लाइक Ma'am, DBDA was it has mechanical aptitude, spatial recognition, spatial aptitude. हाँ स्पेशल तो Spatial में they have mirror images like sorry mental rotation के images they have. Okay, So they would give one like one diagram or one picture and they would give options which would be the appropriate picture image to complete this box हाँ right स्पेशल हाँ तो जैसे सपोज स्पेशल का हमने लिया हाँ तो उसमें क्या है कि वो लोग उसी आइटम को मेजर कर रहे हैं तो उसमें वो डिवाइड हो जाएगा आइटम वो जैसे स्पेशल का सारा ने बताया कि स्पेशल को हम मेजर कर रहे हैं और स्पेशल के लिए हमने एक आइटम बनाया तो वो आइटम डिवाइड हो जाएगा 2 कैटेगरीज में रिलायबिलिटी उस आइटम की और वैलिडिटी राइट तो जैसे आइटम रिलायबिलिटी के बारे में क्या है कि कैसे होएगा कि वो देखा जाएगा कि जो कंडक्ट कर रहा है टेस्ट ही विल एग्जामिन that the degree to which each item differentiates individual कि किसका स्कोर हाई है उस स्पेशल में differentiates means who is getting highest score in that particular domain like special उसमें right then from those who score low on that particular domain okay right तो ये हो जाएगा इससे पता चल जाएगा आइटम की रिलायबिलिटी 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गए हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट ना फिर उसके बाद जैसे ऑफ कोर्स किसी ने हाई स्कोर किया होगा किसी ने लो किया होगा तो इससे इट इफेक्टिवली डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट स्पेशल एप्टीट्यूड राइट समझ में आ रहा है ना हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर से हमें पता चलेगा कि स्पेशल जो है एप्टीट्यूड वो डिफरेंशिएट कर रहा है कि किसका लेवल कितना है राइट उस पर्टिकुलर डोमेन में गेटिंग इट समझ आ रहा है आर यू गेटिंग इट यस मैम समझ में आ रहा है ना स्पेशल एप्टीट्यूड को पर्टिकुलरली देखना है तो कैसे स्कोर को देखना होगा तो वो रिलायबिलिटी में आ जाएगा ऐसी सेम वैलिडिटी में भी हम डिफरेंशिएट करेंगे कि किसने हाई स्कोर किया है उस पर्टिकुलर चीज में और किसने लो स्कोर किया है और फिर हम कंपेयर करेंगे रिस्पॉन्सेस को उस जो हमने टेस्ट दिया था उसमें कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्राइटेरियन टेस्ट and researchers can access the item validity okay so it effectively फिर उससे effectively differentiate between individuals with different levels of spatial aptitude
okay, as measured by the established criterion, because हमने कोई criteria भी तो बनाया होगा special aptitude का, right? जैसे सारा ने बोला कि हम वो एक दिखाते हैं, हम एक image दिखाते हैं, right? तो वो image दिखाना क्या है, वो एक criteria बना रहे हैं हम, right? इस आइटम में ये जो करेक्ट आंसर होगा वो एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि वो एक करेक्ट आंसर होगा, तो वो वैलिडिटी में चला जाएगा, राइट? आर यू गेटिंग इट एवरीबॉडी? Yes, Yes. ma'am. Yes, getting it? Okay, fine. Now next, moving to the next part. Now discrimination index, this is very important. So now I will ask after Amrita is Seema. Seema, you read this part, this whole part. Hello. Yes, Seema. Ma'am, my voice is clear? Yeah, this time it's clear. Yeah, we can hear you. Yeah. Discrimination index. Index of discrimination is that ability of an item on the basis of which the discrimination is made between superior and inferiors. This statement is given by Blood and Birds in 1972. Types of discrimination index. The first one is zero discrimination or no discrimination. The item of the test is answered correctly by all the examinee, or the item is not answered correctly by any of the examinee. Second is the positive discrimination. An item is answered correctly by superior and not answered correctly by inferior. The discriminative power ranges from +1 to -1. Third one is negative discrimination. An item is correctly answered by inferiors and not correctly answered by superiors. The last one, formula for the discrimination of J. The formula for the discrimination of the value of discrimination index is given as DI is equal to RH minus RL divided by NH or NL. Correct, correct. So इसमें ये समझ में आ रहा है ना, discrimination index में तीन चीजें. Why it is there? Because we have to know, we have to create a we have to know on the basis of like discrimination कैसे हो रहा है between superiors and inferiors. This is a definition. Okay, index of discrimination means is the ability of an item okay, on the basis of which the discrimination is made between superiors and inferiors. Of course, this is an aptitude test where we have to it is compulsory, it is necessary कि वो टेस्ट हमें बताए कि who is having highest aptitude, who is having lowest aptitude, so that we will get to know who is superior, who is inferior, right? Then there are types of discrimination index, like zero discrimination. So zero discrimination में like अभी सीमा ने कहा कि the item of the test is answered correctly by all the examiners. Okay, so means all the examiners, because हाँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे सपोज MBA के लिए स्टूडेंट्स को लेना है, they are highly qualified, right? They want to take admission in MBA, IIM. Suppose सभी एक बार में बहुत अच्छे आपको मिल गए स्टूडेंट, so there will be no discrimination. सबने आंसर बहुत अच्छे से किया, right? तो एक वो हो जाएगा. Then positive discrimination. An item is answered correctly by superiors and not answered correctly by inferiors. Okay? तो ये इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में तो हमें पता चलेगा who is getting like who is giving answers correctly and who is not giving answer correctly. But negative discrimination में क्या हो जाएगा? An item is correctly answered by inferiors and not correctly answered by superiors. Okay, so this is a challenge क्योंकि ये एप्टीट्यूड टेस्ट है और वहां पे आप देख रहे हो कि item is correctly answered by inferiors and not correctly answered by superiors. So means it is a negative discrimination, right? और फॉर्मूला क्या है इसका? DI, discrimination index, equal to RH minus RL. Okay, NH or NL, right? Now steps for item analysis. Now Sarah, you read steps for item analysis. Ma'am, before that, can I ask a doubt? Yeah, sure. In the formula above, we are saying it can be either divided by NH or NL. Why is it so? Like, for which discrimination type we are using NH and for which we are using NL? NH और NL. So जैसे negative discrimination आया है या positive discrimination आया है. So in that we are using.
Okay. Okay. Right. Right. Then next is steps for item, or let me ask sir also if sir wants to add something. Sir, hello sir, are you there? Yes, Farah, please tell me. क्योंकि Hello. यहाँ पे RH माइनस RL है, तो RH RL दोनों कैटेगरीज ली जाएंगी, राइट, बट NH के बाद और NL है. ओके, सो दिस इज देयर. सो जब टेस्ट में कौन सा डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट, राइट, तो उस हिसाब से हमें लेना है. Then steps for item analysis. Yeah, Sarah, you read, please. Yes, ma'am. So steps for item analysis. First, arrange the scores in a descending order. Second, separate two subgroups of the test papers. Third, take 27% of the scores out of the highest score and 27% of the scores falling at the bottom. Fourth, count number of right responses in the highest and the lowest groups. Fifth, also count number of non-response examinees. This is the Kelly's method of dichotomization. It is the process of forming higher score groups and lower score groups as per the Kelly's method. हाँ, राइट. जैसे अभी सारा ने ये डाउट पूछा कि कैसे पता चलेगा हाईएस्ट स्कोर का, मैम, राइट, तो वो यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं, स्टेप्स फॉर आइटम एनालिसिस, राइट. यहाँ तक हम लोग डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स पढ़ रहे थे. अब हमको ये, जैसे अभी उसने पूछा कि कैसे पता चलेगा मैम कि नंबर ऑफ हाईएस्ट और एनएल कहाँ लेना है और एनएच कहाँ लेना है, तो हियर ये स्टेप्स से पता चलेगा. सो फर्स्ट अरेंज द स्कोर, और हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है, कुछ रॉ डेटा, मतलब हमारा डेटा है उसके हिसाब से, फिर देन यू विल गेट टू नो कि कैसे करना. पहले तो जितने भी स्कोर आए उस टेस्ट से उनको अरेंज द स्कोर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, then separate two subgroups of the test paper. Okay, separate two subgroups of the step in that paper. So मतलब उसमें two subgroups बनाने, one top 27% of scorers जिसने highest score किया है, और फिर other is 27% of scorers जिन्होंने low score किया है ग्रुप में. सर ने शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था ना, मिड पार्ट क्यों नहीं ले रहे, राइट. सो ऐसे करना है. फिर then next is then count number of right responses in highest and the lowest groups. Okay, also count number of non responses examinees. Okay, तो इस तरीके से अभी करना है. अभी जब डेटा दिखाएंगे then you will get to know कि कैसे किया है. Okay, then you will get to know कि कैसे उसको करा है, ये steps follow करके कैसे करा है. पर ये steps please याद रखना, तभी you will find out कि कैसे वो NH और NL आ रहा है, right, in process. Now क्राइटेरिया फॉर DF एंड DI, ये एक मैनुअल की तरह है. 0.20 माइनस 0.30 मीन्स जैसे आपको एक वो मिलता है ना मैनुअल, और वैसे ये बनाया हुआ है कि मोस्ट डिफिकल्टी है इतना आएगा, 0.30 की और 0.40 की रेंज में डिफिकल्ट, देन 0.40 टू 0.60 की रेंज में मॉडरेट डिफिकल्ट, देन 0.60 0.70 में इजी, और ऐसे करके ये पूरा बनाया हुआ है आइटम. तो जब डेटा आएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या है. ओके, डेटा आपके सामने होना चाहिए, अदरवाइज ये सिर्फ थ्योरी ही समझ में आएगी. जब डेटा एक बार आ जाएगा, जैसे होता है ना, किसी टेस्ट का मैनुअल मैंने आपको दे दिया, अब आप जब तक उस टेस्ट को कंडक्ट नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा कि स्कोरिंग कैसे हो रही है, हाँ, कौन कितना स्कोर ला रहा है, किसका क्या मोटिवेशन है, राइट. तो इसके लिए डेटा होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जस्ट लाइक सर सेड कि वी नीड गुड नंबर ऑफ डेटा. ओके, now criterion for the selection of appropriate item for the final form of the test. Now only positive discrimination index is selected. Zero discrimination index and negative discrimination index items are rejected, right, because ये aptitude test है, तो zero और negative लेके कोई फायदा नहीं है, so that is why we are rejecting them. High and low difficulty value items are rejected. Okay, now relationship between difficulty value and discriminating power. So Amrita, you read these three. Okay, relationship between difficulty value and discrimination power. Both DI and DV are complementary, not contradictory to each other.
Both should be considered in selecting good items. If an item has negative or zero discrimination, it is to be rejected irrespective of the difficulty value. तो ऐसा ये रिलेशनशिप बता दिया डिफिकल्टी वैल्यू का और डिस्क्रिमिनेटिंग पावर का, जो कि हमने शुरू में पढ़ लिया है कि कैसे होना है। अब ये डेटा है और इसमें ये डेटा आप लोग समझो कि कैलकुलेशन ऑफ डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का है। टेबल रिप्रेजेंट स्कोर्स ऑफ 10 इंडिविजुअल्स इन अ पावर टेस्ट। 0 मीन्स रॉन्ग आंसर, 1 मीन्स राइट आंसर, ऐसे करके ये टेबल बनाया गया है। ये A to J 10 इंडिविजुअल्स के रिस्पॉन्सेज है इन अ पावर टेस्ट। ओके, और यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 0 मीन्स, तो ऑब्वियसली 0 वाला तो हम लेंगे नहीं, 0 मीन्स रॉन्ग आंसर, 1 इज राइट आंसर। नाउ कैलकुलेशन ऑफ टोटल मार्क्स फॉर ईच इंडिविजुअल। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है। पहले हमने सारे स्कोर्स निकाले रॉन्ग आंसर राइट आंसर के, ऐसे करके 2 कैटेगरीज बनाई। फिर हमने कैलकुलेट करा टोटल मार्क्स फॉर ईच इंडिविजुअल, टोटल करके 4 आया, राइट, 1 2 3 4, यहाँ पे पूरा टोटल स्कोर लिख दिया 4। देन अरेंजमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट स्टेप। फिर अब ये पूरा, ये जो फर्स्ट 2 स्टेप्स थी वो तो नॉर्मल स्टेप्स थी, राइट, जैसे अभी तुम लोगों ने भी अपने टेस्ट में किया होगा। इंडिविजुअल्स के पहले एक उसमें कितने वो मार्क्स आ रहे हैं, फिर उसका टोटल निकाला, राइट, ये नॉर्मल स्टेप्स है, वो हर टेस्ट में करनी होती है। अब जो स्टेप्स हमें इसमें बताई गई है, अरेंजमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब अरेंजमेंट है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ये आइटम्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे करके अरेंज किया गया है, राइट। 5 जिसमें भी आया है, 5 वाला आइटम पहले लगा दिया, DE में 5 आया है, फिर AC में 4 आया है, ACH, ऐसे करके अरेंज कर देना है। ओके, फिर कंसिडरिंग 27% फ्रॉम अपर ग्रुप एंड 27% ऑफ लोअर ग्रुप। So 27% of 10 individuals equal to 10, then 27% 2.7, हाँ, making it round figure as 3. Okay, ऐसे करके ये फॉर्मूला लगा देना। Now selection of top 3 individuals from upper group and bottom 3 individuals from lower group. Okay, ये टॉप 3 के हाईएस्ट ले लिया हमने और ये टॉप 3 के लोएस्ट ले लिया, यानी कि जो लास्ट है, राइट। फिर सिलेक्शन ऑफ टॉप 3 इंडिविजुअल्स फ्रॉम अपर ग्रुप एंड बॉटम 3 इंडिविजुअल्स फ्रॉम लोअर ग्रुप, ये हाई, ओके, ऐसे करके यहाँ पे ये हमने ले लिया। अब नाउ यहाँ पे फॉर्मूला लगा, जो सारा पूछ रही थी कि NH प्लस NL और ये NH और NL। तो अब डेटा समझ के सारा, आर यू गेटिंग इट, कैसे हुआ है, नंबर ऑफ एग्जामिन्स इन हाईएस्ट ग्रुप एंड नंबर ऑफ एग्जामिन्स इन लोएस्ट ग्रुप, समझ में आया अभी डेटा देख के? यस मैम। हाँ, और अभी ये PPT भी मिलेगा, तो एक बार और डेटा देखना और समझना कि कैसे हुए सारे स्टेप्स फॉलो करके, और फिर भी अगर डाउट है देन वी विल डिस्कस। ओके, क्योंकि अभी डेटा नहीं था ना, तो इसलिए यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि कैसे करेंगे। अब डेटा है, तो ये जब PPT मैं ग्रुप में डालूंगी, तो प्लीज इसका डेटा आप लोग प्लीज इसे समझो और देखो कि कैसे फॉर्मूला, अब डेटा है और अब फॉर्मूला लग रहा है। ओके, और फिर आप फाइंड आउट करो। तो फाइंडिंग आउट RH RL, और ऐसे करके हमने NH एंड NL ये फाइंड आउट करके हमने यहाँ पे करके दिया है। ओके ओके एवरीबॉडी, आ रहा है सबको समझ में? हाँ, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट कभी कंडक्ट किया है किसी ने भी, कभी भी कंडक्ट किया है, कभी भी अपने फील्ड में कभी भी एप्टीट्यूड टेस्ट को, या सिर्फ कभी थ्योरी पढ़ी है? थ्योरी पढ़ी है, सेम। यस मैम, क्योंकि हाँ, ये टेस्ट के नाम है, ये टेस्ट ये मेजर करता है बस। ये इसलिए हमने एप्टीट्यूड का मोस्टली हमने थ्योरी पढ़ा है, और इस बार हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि हम लोग, हमारे पास डेटा है, तो डेटा से तो यू विल गेट टू नो कि ये जो फॉर्मूला लग रहा है वो कैसे लग रहा है, ये स्टेप्स कैसे हो रही हैं, तो देन फिर हम उसको निकाल सकते हैं। बिकॉज एप्टीट्यूड टेस्ट लेना भी एक बहुत एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, क्योंकि वो उस बेसिस पर आप hello Farah, yes sir, you give this data to the students. Yes sir, yes sir, This is better, so they can use it. Yes sir, I'm sending. You just select, yes. Just select the items, Yes, and you put in the Excel, automatically they will fit.
Or sir, I am directly sending this to in Google Classroom so that they can understand the whole PPT with formula. Okay. Yeah, I'm posting it in Google Classroom. That is better. So that will help them. Okay, I'm posting it right now, students. Or so this is sir's data, sir ka data है ये, which will help you to understand item analysis. Okay. So I am posting it. 1 second now. Let me just stop share. Dear student, it is clear to you? Hello. Shara, Shima, Amruta, is it clear? Sir, thoda sa. Huh? No, you at least whatever the theory, I think that Yes, part is sir. clear. Yes, sir. But now you apply it. Sir, in last table, the value we get from administering the formula. No, that is different issue. This is a Okay, power okay. test. Value is not the Okay. power test. Reading, writing, motivation is not the power test. This is Yes, the sir. power test. So whenever there will be the power test, then you can apply this model. But if it is not the power test, then you cannot apply this model. Okay, sir. This is clear. Academic achievement, that is a power test. Verbal reasoning, aptitude test, this is a power test. Interest, that is not the power test. Personality is not the power test. Intelligence is the power test. Okay. So the reliability, validity, and all the norms and everything, that depends upon the type of the test, whether it is a power test or it is other than power test. Clear? Ji, sir. Thank you. Now you apply. Students, I have posted it in Google Classroom, तो please एक बार check करना हाँ डेटा को समझने के लिए. Okay. And how is report? What is the update on report writing? Sarah, have you started? Ma'am, I have started. I'm hoping to finish it next Okay. week. Okay. Okay. You know now you can use ChatGPT and other things for writing introduction and literature review. You can use it. Yes, ma'am. Yes. Yeah. और सीमा स्टार्ट हो जाएगा ना इंट्रोडक्शन. हाँ सीमा. मैम स्टार्ट कर दिया है. वेरी गुड दैट्स द स्पिरिट. और जो वो सर ने थोड़ा मटेरियल कलेक्ट करना शुरू किया है. तो इसलिए ओके. अभी टाइम है
तो मतलब आराम से करना तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों का डेटा एनालिसिस तो हो गया है। और अमृता भी स्टार्ट कर देगी होपफुली इस वीक से। ओके अमृता? Yes, yes, sure, ma'am. या तो फिर वी विल क्लोज द सेशन नाउ, और फिर से मिलते हैं। तो आज कंस्ट्रक्शन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट का हमने डिस्कशन कर लिया है। ओके, डेटा भी है, एंड दैट्स हाउ यू कंस्ट्रक्ट एन एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब इसमें पूरा बताया कि कैसे उसके आइटम्स को हम लोग एनालिसिस करते हैं। ओके, तो ये डेटा को एक बार देखना, एंड देन यू पीपल विल गेट टू नो कि कैसे होता है वो एनालिसिस। ओके Okay, ma'am. ओके ओके सीमा, सारा, अमृता, thank you so much for joining the class today. Thank you, ma'am. Okay, Thank you, good ma'am. night. Good night, ma'am. Thank you, Sarah. Thank you, Seema. Good night. Good night, Amrita. Good night, Sarah. Good night, Seema. Take care. Good Bye. night, ma'am. Bye. 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 So can I also leave? So can I leave, sir? Yeah, it is the next class. We'll start now. Okay, sir. You can leave or you can stay, no problem. Okay, sir. Okay. So how you are feeling with new students, sir? Music therapy students? Yeah, they are good, but they are very busy with so many. Yes, sir. Yes, sir. Because they are the professionals, no? So they are Correct. busy. Naturally, they are busy. Correct, sir. But So still they are giving their, uh, yes. Okay. Seema, you can leave. yeah, Shima now Yes, sir. leave. Seema left. Yes. That is the only problem. They are professional, so they cannot arrange the time. And they are Correct, the sir. senior people. Yes, sir. These students are very senior. So they have the family and they are paying much attention to it. Many things are Correct. there. So, but okay, at least one trial. Yes, sir. In So this still way, they are, we yes, can sir. grow. Slowly we can grow. No problem. Yes, sir. We can grow. Yes.
Have you circulated our advertisement? Yes, I'm doing that only, sir. I'm also doing this certificate work also, sir. Hmm. We have to do some work related to the data analysis. Okay, sir. So data analysis of applied Yes, psychometrics. at the data collection, local investigator, by using the local investigator, we have to collect the data. Okay, sir. After that, data analysis.
No students are joining. What happened? Sir, it is not 9 right now. Hmm. Good evening, sir. Good evening, Putul. বাবা কি সুন্দর ছবি দেখেছো। Thank হ্যাঁ you. স্যার, Thank you. স্যার বলছি আমার পারফরমেন্স দেখা গেছে সেদিনকে? হ্যাঁ, কিন্তু তুমি তো অল্প একটু দিয়েছো, পুরোটা তো স্যার, দাওনি। আমি স্যার ওই মনিকা ম্যামকে পুরোটা 3টে ভিডিও হয়েছে, যেহেতু আমাকে বললো 5 মিনিট করে দিতে, তো 5 মিনিট করতে 3টে ভিডিও হয়েছে। তো আমি 3টেই ওকে পাঠিয়েছিলাম, ও একটা প্লে করেছে কেন তো আমি সেটা বুঝতে পারছি না। সে তো আর ও জানে না, মানে ও ভেবেছিল বোধহয় ওই একটা ভিডিওর মধ্যেই সবগুলো আছে। না স্যার, ও দেখেছে 3টে ভিডিও, দেখে আমাকে সকালবেলা আবার রিপ্লাইও করলো যে খুব ভালো হয়েছে, করে 3টে একটা কেন করলো আমি সেটা বুঝতে পারছি না স্যার। ও, তাও তো আমি জানি না। কিন্তু স্যার তাহলে আমি যখন পারফর্মই করিনি তাহলে তো আমি সার্টিফিকেট তো আমার পাওয়া উচিত না। আমাকে জিজ্ঞেস করছিল ছবির জন্য, তো আমি তো আমার পারফরমেন্স তো কেউ দেখতে পাইনি, তাহলে আমি তো মানে না, কি তুমি বলবো। তো Hi, অল্প hi, একটু Upasna. করেছো, মানে 3টে হয়তো Hi, yeah. হয়নি। Upasna, sir, can I talk to Upasna? Yeah, Upasna, sure. yeah. Upasna, आपका half. Can I talk to you in Hindi? Is it okay? हाँ हाँ, ओके, बोलिए। हाँ, उपासना, आपका आधा वीडियो प्ले हुआ था प्रोग्राम में? कोई भी वीडियो आपका प्ले हुआ था परफॉर्मेंस का? मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मतलब उसने कहा कि आधा, मतलब उसने ट्राई किया था लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से या फिर कुछ हुआ इसलिए वो प्ले नहीं कर पाई, तो अच्छा, ऐसे। अच्छा, मैं ना वीडियो आपका परफॉर्मेंस का देख लेती हूँ। अगर हाफ वीडियो प्ले हुआ है ना, तो मैं हम्म, आपको, आप प्लीज सर्टिफिकेट ले लो। आप Hmm. सर्टिफिकेट, हाँ, ओके। हाँ अगर अगर लेकिन क्योंकि लेकिन प्रोग्राम में मुझे ना, आपका, हाँ हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, क्योंकि बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन मुझे ना सिर्फ एक ही बात बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने हाँ, इतना मैं समझ रही करके हूँ। बनाया हाँ, था, तो एक्चुअली, यस यस, मैं आपको फीलिंग समझ पा रही हूँ, बट एक्चुअली हाँ, मुझे टेक्निकल, सबमिट करने में थोड़ा हाँ लेट हो गया था। हाँ, करेक्ट करेक्ट, नहीं, टेक्निकल इशू की वजह से भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, राइट? आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि मतलब ऐसा हुआ है, लेकिन अगर आपका वीडियो प्ले हुआ है थोड़ा सा भी, तो आपका कंट्रीब्यूशन तो प्रोग्राम में 100% ही हम लोग मानेंगे। सो प्लीज आप सर्टिफिकेट, प्लीज आप सर्टिफिकेट तो लो, बिकॉज हाँ प्रोग्राम में है ना, प्रोग्राम में आपका परफॉर्मेंस आया है। सो मैं हाँ, आपका, मैं ना एक बार आपका वीडियो में देख के चेक करती हूँ, अगर आपका प्ले हुआ है, थोड़ा भी पार्ट प्ले हुआ है, तो आप प्लीज ठीक आप है। सर्टिफिकेट, हाँ हाँ, ठीक है, आप इतने मतलब फोर्सफुली बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन मैं मतलब फोटो भी दे दूंगी, लेकिन मैं दिल से हाँ, नहीं मान सकती कि मैं परफॉर्म किया, इससे मैं नहीं बेटर तो नहीं मैं नहीं, कर आई सकती आई थी। आई नो, एक आर्टिस्ट के लिए ये अच्छी, मतलब मैं समझ सकती हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप ये भी सोचिए कि आपका थोड़ा भी प्ले हुआ है, तो आप व्यूवर्स के हिसाब से सोचिए कि वो आपने इतना भी परफॉर्म किया और हमको देखने को मिला, तो हमारे लिए तो आधा देखेंगे तो समझ में ही तो नहीं आएगा ना, क्योंकि पहले तो इंट्रोडक्शन था, मतलब 1.5 मिनट हाँ, तक इंट्रोडक्शन था, उसके बाद वो पोएम था, क्योंकि वो मोनिका मैम ने मुझे बताया था कि पूरा मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन देखें उसके बाद बनाने के लिए, वरना मेरी वीडियो तो 2 मिनट 3:20 में खत्म हो जाती, तो मैं उसके बातों के हिसाब से ही थोड़ा बड़ा करके बनाई थी कि चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन दे के फिर मतलब हो जाएगा, तो अच्छा, दैट्स व्हाई। मैं अच्छा, मैं एक बार देख लेती हूँ। आप क्योंकि आर्टिस्ट हो, आप, मैं आर्टिस्ट का माइंड समझ सकती हूँ, उनको सब, वो लोग बहुत परफेक्शन को डिजायर करते हैं, मैं आपका पॉइंट पूरा समझ रही हूँ, लेकिन अगर आपका थोड़ा भी प्ले हुआ है और हमको देखने को मिला है उतना भी परफॉर्मेंस, तो आप डिजर्व करते हो सर्टिफिकेट। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अब हमें तो इतना भी नहीं देखने को मिलता है, इतना ये जो प्रोग्राम हुआ है इसका परफॉर्मेंस, हम्म, क्योंकि डिफरेंट पार्ट ऑफ, आप स्टेट्स के हिसाब से सोचोगे ना,
तो आपको समझ में आएगा कि आपने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है क्योंकि क्योंकि आप देखिए, मैं कोलकाता से नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो ये चीजें देखना कोई मतलब आम बात नहीं है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। आपका थोड़ा भी अगर मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ऐसे कोई प्रोग्राम्स भी टीवी पे नहीं आते हैं, राइट। तो मैं वीडियो चेक करती हूँ, अगर आपका थोड़ा भी प्रेजेंट हुआ है तो आप प्लीज आप सर्टिफिकेट जरूर लो। आप बिल्कुल ऐसा मत समझो कि आप डिजर्व नहीं करते हो। ओके, नहीं, डिजर्व की बात नहीं है, मतलब मैं यही बोल रही हूँ कि अगर हाफ-हार्टेड, किसी हाँ, ने आई देखा नो। ही नहीं तो मैं क्यों लूं, मतलब मैं कुछ किया ही नहीं तो मेरा तो मतलब लेना जायज नहीं होगा ना, दैट्स नहीं, व्हाई। आई नो मैं देखती हूँ, और अगर वो थोड़ा भी प्ले हुआ है और मुझे एटलीस्ट, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मुझे अगर समझ में आ रहा है तो मैं आपको जरूर ऑनेस्टली बताऊंगी, और आप प्लीज आप ठीक सर्टिफिकेट है। फिर आप, है ना, मैं अभी चेक करके आपको बताती हूँ। ओके, सॉरी ऐसा हो गया, टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट टाइम से हम लोग नहीं, इट्स एडवांस में ओके। सब ओके, थैंक यू उपासना। Hello, Farah. Amit has joined. Oh, Amit, Amit, class is over. I'll send you the video, Amit. Yeah, this is a different class. You can leave, Amit. Yeah, it's okay. I'll send